Hello, my dear students and friends. So, welcome to our RSV Physics class. So, this class is on problem set for your class 11 NEET JEE, and this class will be discussing on gravitation. So, different types of problem set I will be discussing. So, there is a typical problem set that contain lots of problem, at least 10 to 12 question of different types. So, you have to focus on the different types of problems, and then you have to practice. So if you solve 10 to 15 questions, then you'll obviously will get common and you get, and these types of problem will necessarily coming in your different types of competitive exam. So if your concept is clear, then you can attempt every questions quickly. Okay, let's read the problem number 1. So you know the planets moving in obviously elliptical orbit. So this is your sun, and this is our solar system. This is the planet, whether it will be Earth or Mars, etc. But see, what question is sun is at the focus, and this is the semi-major axis, this semi-minor axis here somewhere, and I have drawn a perpendicular to the focus point is. So kinetic energy of a planet, this planet moving at point A, B, and C, where kinetic energy K, B, C. So what is the relationship? Whether K is greater than or equal to greater than less than, इसके बीच में क्या relationship है? That I have to find. So since Kepler's first law, you know the angular momentum is conserved. This is a conservative force field and centripetal, है ना? So in conservative force field, on your angular momentum will be the central force, है ना? So this is angular momentum will be conserved. So that means आपका जो है m mass of the planet mv va ra equal to m vb rb equal to m v c rc. So ra rb means this is ra, this is rb, center distance from the focus, and this is rc. So see, total angular momentum conserved, and when it is coming, so equal time जो है आपका aerial velocity is constant from Kepler's first law. So it will swipe, the planet will swipe equal area in equal interval of time जो है ना. So up now from this aerial velocity a constant, there is coming angular momentum जो है, angular momentum equal to mvr is conserved. Now see, angular momentum m is constant, va vb, where ra is very much small, है ना. See here ra is very much small, then जो है rb, then rc. Am I right? R is small, this is rb greater, then rc is this much, this will be. So from this relationship, this ra less means va, consecutively you can write va greater than vb greater than vc. From this relationship, so when will be planet will be farthest perihelion and aphelion. Aphelion point जो है ना, so when planet will be farthest from your sun, then its speed will be less. When planet will be near to the sun, then its speed is higher. So angular, what will be kinetic energy? Kinetic energy is just of your half mv square. So from this relationship you can write, what you can write now, when kinetic energy means Ka greater than Kb greater than Kc. Now any types of problem you can solve, है ना? You should be able to solve this types of problem, aerial velocity constant and as well as your angular momentum constant. Now aerial velocity problem, this next problem I'm showing here, the aerial velocity problem. See, this is the again ellipse, the planet is moving, a planet is moving A to B, and it will swipe area SAB.
दिस एरिया ए से बी जो है इसका, एंड ए प्लैनेट इज मूविंग सी टू डी एंड इट विल स्वाइप द एरिया एस सी डी. सो दिस एरिया इक्वल टू ट्वाइस एस सी बी एंड टाइम टेकन फ्रॉम सी टू डी. सी टू डी यहां से टाइम यहां लगता है T1 and this will be T2. So what will be the relation between T1 and T2? You have to find. So Kepler's first law, you know, aerial velocity constant means S CD over how much? T1 equal to aerial velocity means is area over time, है ना. So twice this जो है आपका ये कौन सा है, area of SAB over T2. This SAB over T2. Okay. Now SCD equal to how much? Twice SCD. So SCD is how much? Twice area of SAB. Okay, है ना. So T1 equal to this will be 2, है ना. T will be twice T2. So this relationship. So from aerial velocity and angular momentum conserved, these types of problem may be coming in. Then so you should be able to solve it. Now read the problem number 3. The period of revolution of a planet A around the Sun is 8 times that of B. The distance of A from Sun is how much times greater than that of B? So this problem is from Kepler's third law. Okay. So this is your Sun and this again there is your orbit. So this planet it is A, this planet is B. So different orbit में घूमता है ना. So this distance, so revolution period TA, this TB, that revolution of a planet A around the Sun is 8 times that of B, है ना. So planet A इसको AB कर देता हूँ ना, A this is B. So this is equal to 8 times. Okay, revolution. So the distance that this planet जो है RA से सन से आपका जो है RA and RB है ना. What is the RA and RB relationship? So you know the distance is higher, then time period will be also higher, है ना. So you have to, so you know Kepler's third law, T square proportional to R cube. Okay, so you can write TA by TB square equal to, you have proportionality constant will be cutting down, RA over RB to the power cube. Okay, so RA by RA over RB equal to TA by TB, TA over TB to the power 3 by 2, that is 8 to the power 3 by 2, है ना. So 8 to the power 3 by 2 means how much it is? So this will be 8, है ना. This is that R equal to, this is 2 by 3, है ना. Not 2, this is 2 by 3, है ना. So 64, है ना. So 64 to the power, so this will be, so 64 to the power, so how much it is? 4. Okay, so RA over RB equal to 4. So RA will be greater, है ना. RA will be 4 times that of RB. So these types of problem may be coming in your exam. Simple, use the relationship T square proportional to R cube, means that much. So this is from Kepler's third law, and then Kepler's aerial velocity constant is from your Kepler's second law, and planets are moving in elliptical orbit. This is the Kepler's first law. Okay, so these 3 laws and associated problem will be very much important. Okay, so now the problem number 3 is over. Now read the problem number 2. Okay, see, a body of mass 60 gram experiences a force of 3 Newton. The magnitude of gravitational field intensity is how much?
So there is a long terminology and etc. But problem is simple, but terminology you will be confusing. So if your concept is clear, then you will be able to solve. Mass is how much? M equal to 60 gram equal to 60 into 10 to the power minus 3 kg. And experience a force. So force equal to how much? Force equal to Gm over r square equal to 3 Newton. Fine. Now, what is the gravitational field intensity? So field intensity is force experienced by point mass or unit mass when m will be 1. This जो है ना, so you can write intensity equal to F over, इससे divide कर दो, so Gmm over r square. This will be the field intensity. Okay, so how much? F over 3 Newton over 60 into how much? Minus 3. You know, problem is very much simple, but terminology is different. So, understood? So, if you know the definition, then it is very much simple. Okay. So, F by M just, so this is your gravitational field intensity. Okay. Gmm by r square or force over mass. Now, read the problem number. So, how much simple problem, but a conceptual problem. Now, problem number 5. A body weight of 72 Newton moves from Earth's surface. This is your Earth's surface. The body is 72 Newton weight, and moves from half of the Earth. So Earth का जो radius है, इसका half distance इधर चला गया है ना. And how much force will be feel due to Earth at that height? है ना. This is Earth height, and half of distance यहाँ पे चला गया. So now the distance from the Earth is r plus r over 2. So this equal to 3r over 2. So how much force it will face? So body weight means 72. So this mg equal to, so gravitational force is Gmm over r square, है ना. ये capital R लिख दीजिए, है ना. So this is the body weight, है ना. So now, how much will be the force at that height? So F, this force mg, this weight, है ना. Body weight means the gravitational force from, है ना. तो इसके surface में जितना body weight होगा उतना ही उसका gravitational force. Now the force at that height, है ना, 3r by 2 equal to how much? Gmm over 3r by 2 square equal to how much? 4 by 9 Gm, है ना, Gmm over r square. So 3 by 2 height मतलब यहाँ पे. So this is how much? 4 by 9 into Gmm by r square जो है आज सरफेस में कितना था? 72. 8 equal to 32 Newton. So if it is at Earth's surface it is 72, then 32 Newton will be at distance of half of radius of Earth. मतलब 3r by 2. So this will be the thing. So this problem is simple, है ना. So now read the problem number 6. Plot the gravitational field intensity of Earth with distance r and from the center of the Earth, and also plot due to spherical shell. So now gravitational field intensity. So you have calculated the force and everything ना. So force आपने कैसे ये किए थे? आपको अगर ये है, so gravitational field intensity. So see, gravitational force you can write also minus Gmm over r square. Why it is minus? This is attractive force field. And if your magnitude, then you just write it. So in vector form, when you write, then always you have to give negative sign of this is r cap. Okay. So now gravitational field intensity जो है आपका, so field intensity में by m.
So gravitational force inside just earth of, this is your R. So this is R when this is R less than capital R. This is your radius of R, and this is here R is greater than R. So field intensity you have to plot. So see. So here inside portion जो है, so this inside portion field intensity, this E equal to how much? Minus of G m over जो है R क्यूब इंटू R. ये आप देखेंगे, इसमें हमने कैलकुलेट किए थे प्रीवियस क्लास में, जो लेक्चर थ्योरी लेक्चर उसमें देख लीजिए एक बार, है ना. सो दिस इज आपका वैल्यू ये, सो माइनस साइन है ना, दिस इज योर जो है ये यहाँ पर आर कैप है ना, along this radial direction. एंड फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड में क्या होगा? आउटसाइड में जो है आपका माइनस जी एम ओवर जो है आर स्क्वायर. जस्ट ये आपका एफ इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर जो है ये एम नीचे चला जाएगा. सो इज ए वेक्टर साइन देन आर कैप. सो नाउ इन वेक्टर प्लॉट सी, इन मैग्नीट्यूड प्लॉट आपने इस तरीके से किया है ना. सो ये दिस इज योर रेडियस. ओके, इफ यू दिस इज योर रेडियस सी इन so up to earth radius it is proportional. So if your magnitude plot, it is just proportionality, and then it is coming outside is 1 upon r square. This is r and it is magnitude है ना, and then it will coming 1 upon r square this. And if you plot it in vector form, then the situation will be in negative sign. Okay, so this will be this portion, and this is 1 upon see, this is 1 upon r square, and this is proportional to r. So in vector form. So when it is plot in vector form, this is minus जो है ये माइनस साइन, विच माइनस साइन आएगा इसमें है ना. एंड इफ यू प्लॉट मैग्नीट्यूड देन इट विल बी जस्ट ऑपोजिट. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. सो व्हेन इट इज प्लॉटिंग दिस नेगेटिव साइन, इट इज प्लॉटिंग जो है आपका विथ साइन टेकन केयर ऑफ दिस, एंड व्हेन इट इज ओनली मैग्नीट्यूड देन यू हैव टू प्लॉट दिस. सो समटाइम यू मे गेट आल्सो कंफ्यूज्ड, कहीं नेगेटिव साइड में है कहीं ऊपर साइड में है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. तो आपको बहुत सारे ऐसा ये पिक्चर भी अगर दे दिया वो भी दिया, तब तो आपको देखना है, आपको यू हैव टू टेक दिस पोर्शन. समटाइम प्रॉब्लम में आपको ऐसा भी दिया जाता है, और फील्ड इंटेंसिटी जो है ये जो है वेक्टर साइन में है, तो आपको इस तरीके से प्लॉट करना है. अब नाउ फॉर ड्यू टू सेल, दिस इज द अर्थ, दिस इज द सॉलिड पोर्शन है ना. फॉर सेल, सो सेल इज दिस इज ब्लैंक है ना, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे अगर मान लीजिए एक छोटा सा आपने ये लिया है जो गॉस सरफेस, ये आपने बाद में सीखोगे जो. सो इसमें जो है कि किसी भी पॉइंट में आप देख दीजिए, आप यहाँ पे क्या है, कोई भी मास नहीं है ना, ये m0. सो फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड दिस सेल विल बी 0 क्योंकि देयर इज नो मास, एंड आउटसाइड दिस किसी भी पोर्शन में जो होगा, so this will be the mass of cell only है ना. so again it will be following total mass जो है 1 upon r square. so how the plot will be, how much, this is if you this is r है ना, so this will be 0 intensity due to cell, how much, and then it is 1 upon r square, this is 1 upon r square and इधर 0. so this will be the plot, and it is in vector sign, then it will be just plot है ना, यहाँ से है ना. तो ये तब आपको ये इरेज करना है वेक्टर फॉर्म में है ना. सो दिस इज द प्लॉट. ओके, नाउ दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, one kinds of problem obviously will come in your exam. So typically you will just see that, and you have to remember the plot, and if you remember the theory class, then it is very much easy to plot the things. Okay, now see the problem number 7. Okay,
two particles of equal mass m go around a circular radius r under the action of mutual gravitational force. The speed of each particle is how much? So two particle is rotating under, जो है two particle is rotating, है ना, so under mutual gravitational force, है ना, बाइनरी स्टार आप देखोगे, है ना, बाइनरी स्टार, दोनों स्टार ऐसा ऐसा इसके एक्सिस में घूमता है ना, टू पार्टिकल्स ऑफ बाइनरी स्टार के केस में दोनों स्टार आपस में, जैसे हम लोग बचपन में एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूमते थे ना, तो इस टाइप का बाइनरी स्टार में इस टाइप का इवेंट दिखा जाता है. सो टू पार्टिकल गो अराउंड सर्कुलर रेडियस ऑफ आर, दिस पोर्शन इज आर, हाउ मच, दिस इज आर, है ना, म्यूचुअल ग्रेविटेशन. तो स्पीड ऑफ इच पार्टिकल, दोनों पार्टिकल का स्पीड कितना होगा, अब बताइए, इसे करना है. दोनों एक दूसरे ग्रेविटेशनल फोर्स में, मान लीजिए इसका मास इसका भी मास है, तो हम दोनों का वेलोसिटी कितना होगा, सेम मास होगा तो दोनों का वेलोसिटी भी सेम होगा. सो अब कैसे उसको निकाला जाए. सो दोनों का जो है ये एक तो इधर ग्रेविटेशनल फोर्स और इधर होगा आपका एम वी स्क्वायर ओवर आर, दिस इज सेंटीमीटर फोर्स, है ना, एम वी स्क्वायर ओवर आर इक्वल टू जी एम एम, जो दोनों का मास सेम है ना, जी एम एम ओवर जो है आर कितना होगा आपका रेडियस, है ना, इन दोनों का जो आर है, सो एम वी स्क्वायर आर, सो ये जी दोनों का ये है ना, यहाँ पे हाँ, ये इसमें जो है आपका ये सेंटर से जो है इधर होगा, है ना, तो यहाँ पे अगर फोर्स लीजिए तो ये आर होगा इधर, और दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ट्वाइस आर, तो ये कैपिटल आर होगा, है ना, ये ट्वाइस कैपिटल आर स्क्वायर. ओके, नाउ सी, नाउ अंडरस्टूड. सो जी ये जो है आपका, हाँ, सो यहाँ से आपको क्या करना है, द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, तो स्पीड आपको निकालना है कितना है, सो यहाँ से आप निकाल सकते हो इज ट्वाइस आर स्क्वायर जो है 4r स्क्वायर, है ना, सो v इक्वल टू, सो v स्क्वायर इक्वल टू जी एम, है ना, बाई जो है दिस 4, दिस आर स्क्वायर 4r. Okay, read the problem number 8. Imagine a new planet having same density as of Earth. It is 3 times bigger than of Earth, and acceleration due to gravity on that planet is g, and acceleration due to gravity as g is at Earth. So g and g prime is the relationship you have to find. So this is your Earth and this is bigger than Earth 3 times, है ना. So प्लेनेट हैविंग सेम डेंसिटी, बस इसका डेंसिटी सेम है ना, बट इसका जो है रेडियस, सो आपका जो है दिस इज ये है ना, सो आप नाउ आपका जो 3 टाइम्स बिगर, है ना, एंड 3 टाइम्स बिगर मीन्स इसका रेडियस इज 3 टाइम्स, है ना. सो द रेडियस ऑफ दिस जो है ये प्लेनेट अगर रेडियस जो है आर, सो ये होगा आपका, ये अगर आर होगा तो इसका रेडियस होगा 3r, है ना. सो नाउ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो g इक्वल टू हाउ मच, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, है ना, ये आपने देखे है ना. सो आप या इसको एक जनरल फॉर्म में अगर लिखेंगे, सो जी एम मीन्स 4/5 पाई आर क्यू रो ओवर आर स्क्वायर. Okay, so this is how much, 4/3 pi g rho into r, g in terms of radius. So g prime equal to by g equal to how much will be g prime, this is if you read ये acceleration due to g and this is g, so g prime will be this 3r, है ना, ये तो सबसे constant quantity over r, so g prime equal to 3r. Okay, clear.
मतलब 3 इंटू जी है ना, 3 इंटू जी। सो अर्थ में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, बट यहाँ पे कितना होगा, 3 इंटू 9.8 होगा, है ना। इसका डेंसिटी सेम है एंड उसका मास। सो डेंसिटी अगर सेम है तो इस कंडीशन पे आपका जी प्रोपोर्शनल टू आर होता है ना। सो इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आएगा है आराम से आप उसको करना चाहिए तुरंत, है ना। ओके, सो नाउ रीड द प्रॉब्लम नंबर 9. So this is typical problem, and this problem you should be able to solve. So this problem is, so 10 to 15 problem I am again and again I am repeating, 10 to 15 problem you have to solve. Not so different types of problem I have chosen from different exam papers and your different books. Okay, so see, read the problem number 9. Acceleration due to gravity at a height 1 kilometer above earth is same as of depth, है ना। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने कैलकुलेट किए थे ना, जे एट डेप्थ यहाँ पे d एंड हाइट h, ये भी आपने कैलकुलेट किए थे हाइट पे, है ना। सो देन इसका ये सेम है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, है ना। ये कितना हुआ था आपका, सो g इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस h बाई दिस r, ये आपने देखे है ना, ये तो कैलकुलेट किए थे आपने, जहाँ पे आपका h इज वेरी मच लेस देन r, है ना, r जब छोटा कम हाइट पे। एंड g डेप्थ में आपने क्या कैलकुलेट किए थे, g इक्वल टू ये सरफेस में 1 माइनस d ओवर r, ये आपने। सो ये बता रहे दोनों सेम, तो आपको d कैलकुलेट करना है, दोनों सेम मतलब नाउ आपका ट्वाइस h ओवर r equal to 1 minus d over r. So d equal to how much, d equal to यहाँ पे जो है r कट गया, equal to twice h, है ना। So if your d twice h means acceleration due to gravity at height h 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर हाइट पे अगर जितना होगा 1 किलोमीटर, सो अंदर में जो है आपका सो 2 किलोमीटर पे। So acceleration due to gravity at 1 किलोमीटर एबव हाइट जितना होगा, यहाँ पे जितना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, और यहाँ पे 2 किलोमीटर अंदर में, मतलब अंदर में थोड़ा ज्यादा जाना पड़ेगा ताकि आपका उसको उतना ही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिले, है ना। ठीक है, सो अंदर में वेरिएशन थोड़ा सा कम है ना, बाहर में थोड़ा ज्यादा है, 1/r² के हिसाब से। बाहर में आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अपने आप प्लॉट the variation of g. Now it is coming to the picture. So now the plot. So आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे, so ये आपका एक्सीलरेशन ड्यू और फील्ड इंटेंसिटी सेम, यू नो mg इक्वल टू gm ओवर r², so g इक्वल टू gm बाई r², और ये आपका फोर्स, और फील्ड इंटेंसिटी क्या था आपका, E इक्वल टू ए बाई एम इक्वल टू जी एम ओवर r²। सो फील्ड इंटेंसिटी एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर सेम, बट इट इज जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो है आपका, ये दोनों ये इसका जो टेक्निकली सेम है ना। सो आप उसका भी सेम प्लॉट होगा आपका, कैसे प्लॉट होगा, अंदर में जो है आपका linear relationship, then 1/r², जस्ट लाइक योर g, और ये आपका e सेम होगा। अगर फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपका नीचे इधर आ जाएगा, है ना, नेगेटिव साइन एक आ जाएगा, इसमें नेगेटिव साइन, है ना। सो ये आपका जो है प्लॉट, ये अंदर में इसका ये आर रेडियस ऑफ अर्थ सरफेस, ये आपका अंदर में अर्थ के अंदर, ये बाहर, दिस इज 1/r² एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू r। ओके, सो अगेन दिस आई एम प्लॉटिंग दिस, है ना। सो इस टाइप का प्लॉट और जो है एक ना एक प्रॉब्लम आता ही है आपको, है ना, आप यू शुड बी एबल टू। नाउ रीड द प्रॉब्लम नंबर 10. Two bodies of mass m and 9m are placed at a distance r. The gravitational potential on the line joining the bodies where gravitational field equal to 0 will be how much? So you have to know the concept of gravitational potential and gravitational field. Okay,
So you know, two particle, this is m and 9m are placed as a distance r. So where gravitational field will be 0. So you know the gravitational field how much is? Gravitational field equal to F over m equal to g m over जो है r square. So gravitational field let somewhere else 0 यहाँ पे होगा, इसका फील्ड तो ज्यादा होगा, है ना. सो यहाँ पे मान लीजिए ये एक्स डिस्टेंस है यहाँ पे, है ना. सो जी एम ओवर ये कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर, है ना. ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये एम कितना है, ये एम, ये सिंपल एम है ना, दिस इक्वल टू जी एम की जगह में ये 9m होगा और ये आपका ये कितना डिस्टेंस होगा आपका, this one is r minus x, so r minus x square. Okay, so how much it will be? So r minus x square equal to 9x square, है ना. So r minus x equal to 3x, है ना. So x equal to r over 4, है ना. X equal to this is r over 4. So what will be the potential, gravitational potential? इंटीग्रेशन ऑफ जो है आपका जो इंफिनिटी से वहां से वो डिस्टेंस हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है v इक्वल टू इंटीग्रेशन जो है आपका g एम एम ये जो है आर स्क्वायर इंफिनिटी से आपका उस इंफिनिटी से r डिस्टेंस में लाने में आपका. सो दिस विल बी माइनस g m worked by r. So potential equal to, say again using the relationship जो है आपका, so ये मैं यूज करता हूँ आपका, है ना. आप सी, so g is, so now potential will be total potential v1 plus v2 due to m and 9m will be how much, minus of जो है g m over ये जो है इस पॉइंट पे, इन पॉइंट पे क्या होगा आपका, एक तो आपका r/4 प्लस जो है g दोनों ही जो है यहाँ पे आपका कितना होगा, ये 3r/4 है ना, इनटू ये कितना m कितना है यहाँ पे स्मॉल m, ये कितना होगा 9m, है ना. तो ऊपर में क्या होगा 12 इधर 4 16, सो इक्वल टू माइनस 16 GM over R. So this is the total potential. Now understood? तो इसकी वजह से ये पोटेंशियल जो है इस पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल टू V1 प्लस V2. सो V1 ड्यू टू स्मॉल m एंड दिस इज ड्यू टू 9m. तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा माइनस GM बाई इसका डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से r/4 एंड नाउ GM ये 9m बाई इसका यहाँ से ये इसका डिस्टेंस कितना 3r/4, दिस इज 3r/4, है ना. सो यहाँ पे फिर टोटल पोटेंशियल आपका दिस मच. ओके, सो दिस इज द, सो इन दिस प्रॉब्लम देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आल्सो. ओके, so if you solve one problem, then multiple concept and multiple problem you have to be able to solve. Now there is a last problem. This is problem number 11 from escape velocity. So again escape velocity is the that much velocity, by giving that much velocity you can cross the gravitational field. So if your earth and if you put your rocket in such that it will escape the gravitation. So this is the kinetic energy you have to give, half mv square equal to आपको क्या है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड जो है आपका GM बाई जो है ये आपका r स्क्वायर, है ना. सो इनटू जो है आपका dr, ये आपका r डिस्टेंस से आपका जो है इंफिनिटी तक लेके जाना है, यहाँ से ये आपका r डिस्टेंस आपको इंफिनिटी तक जाना है ना. सो ये कितना होगा आपका, सो बेसिकली ये आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद GM ओवर जो है आपका r. ओके, सो नाउ v इक्वल टू
ट्वाइस जो है ट्वाइस gm/r root over of, so this is your escape velocity. So gm this is will be r है ना. So now v will be this much है ना. So gm again you can write also, आपका gmg equal to how much, gmm over r square, and ये equal to, so gm equal to gr square. So gr square भी है, so again you can also write twice gr also है ना, in terms of acceleration due to gravity है ना, ये भी लिख सकते हो है ना. So now इसके यहाँ पर now आप see our problem, how much it is problem, so ये escape velocity. So now read the problem number 11 is quickly. So escape velocity from the earth surface is v, ये आपका earth surface से जो है v, and the escape velocity of from the surface of another planet of radius 4 times इसका रेडियस ज्यादा है, यहाँ पे इसका escape velocity कितना होगा. So and same mass density means आपको you have to write in terms of root over of twice g mass density means 4/3 pi r cube rho over r. Okay, see here this is r, this is r square. So v जो है ये मान लीजिए v1, ये आपका v, so ve1 by ve2 equal to how much, root over of जो है r1 by r2 ये स्क्वायर, क्योंकि v इन दिस केस v ये रूट ओवर ऑफ ये जो है आपका r square. So how much it is, r1 plus r2, r1 by r2, so here this is 4 times है ना. So 4 square जो है 4, so v e1 by जो है ये आपका यहाँ से ये जो है यहाँ पे 4 टाइम्स है ना, e1 by v e2 equal to 1/4. सो आपका 4 टाइम्स जो है आज का इसके वेलोसिटी से इसका वेलोसिटी 4 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा तब आपका. सो आज का इसके वेलोसिटी कितना है, 11.2 किलोमीटर पर जो है सेकेंड पर सेकेंड में 11.2 किलोमीटर है ना. सो इसके केस में आज के में 4 इंटू जो 44.8 किलोमीटर पर सेकेंड में आपको, सो इसके वेलोसिटी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा है ना. सो नाउ वी हैव सॉल्व्ड 11 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है ना, एंड एवरी यू मस्ट गेट one common question from gravitational force in your every year's exam, and I hope one common question from your 11 set of problem. So just see the problem and practice it. Okay, thank you. पढ़ते रहिए.